सुशासन का विश्वास मिला है, तो इसमें भी आपकी मेहनत ने रंग लाया है। पिछले 9 वर्षों में अगर भारत के विकास को नई गति मिली है, तो ये भी आपकी भागीदारी के बिना संभव नहीं था। कोरोना के महासंकट के बावजूद आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत फिनटेक वर्ल्ड में छाया हुआ है। डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत नंबर 1 है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 2014 के मुकाबले आज देश में 10 गुना ज्यादा तेजी से रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। 10 टाइम 2014 के मुकाबले आज देश में 2 गुनी रफ्तार से नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है। 2014 के मुकाबले आज देश के पोर्ट्स में कैपेसिटी ऑगमेंटेशन लगभग 2 गुना हो चुका है। 2014 के मुकाबले आज देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है। आज यहां जो पुरस्कार दिए गए हैं वो देश की सफलता में आपकी इसी भागीदारी को प्रमाणित करते हैं, आपके सेवा भाव को परिलक्षित करते हैं। मैं सभी पुरस्कृत साथियों को फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से देश के सामने पंच प्राणों का आह्वान किया है। विकसित भारत के निर्माण का विराट लक्ष्य हो, गुलामी की हर सोच से मुक्ति हो, भारत की विरासत पर गर्व की भावना हो, देश की एकता एकजुटता को निरंतर सशक्त करना हो और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना हो। इन पंच प्राणों की प्रेरणा से जो ऊर्जा निकलेगी वो हमारे देश को वो ऊंचाई देगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। मुझे देखकर भी अच्छा लगा कि आप सभी ने इस वर्ष सिविल सेवा दिवस की थीम का भी विकसित भारत रखी है। विकसित भारत के निर्माण के पीछे क्या सोच है, ये उस पुस्तक में भी झलकता है जिसका अभी विमोचन हुआ है। विकसित भारत सिर्फ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधुनिक निर्माण तक सीमित नहीं है। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का सरकारी सिस्टम हर देशवासी की आकांक्षाओं को सपोर्ट करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का हर सरकारी कर्मचारी देशवासियों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत में सिस्टम के साथ जो नेगेटिविटी बीते दशकों में जुड़ी थी वो पॉजिटिविटी में बदले। हमारा सिस्टम
देशवासियों के सहायक के रूप में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाएं। साथियों, आजादी के बाद के दशकों का हमारा अनुभव रहा है, योजनाएं कितनी भी बेहतर हो, कागज पर कितना ही शानदार रोड मैप क्यों ना हो, लेकिन अगर लास्ट माइल डिलीवरी ठीक नहीं होगी तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। आप भली भांति जानते हैं कि पहले के सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 1 करोड़ काल्पनिक महिलाओं और बच्चों को महिला और बाल विकास मंत्रालय की सहायता जा रही थी। ये पहले की सिस्टम ही थी और उसी की देन थी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय करीब 30 लाख फर्जी युवाओं को स्कॉलरशिप का लाभ देता रहता था। और ये भी पहले की ही सिस्टम की देन है कि मनरेगा के तहत देश में लाखों ऐसे फर्जी अकाउंटेंट बने, लाखों ऐसे श्रमिकों के पैसे ट्रांसफर किए गए जिनका अस्तित्व ही नहीं था। अब सोचिए, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, वो सिर्फ कागजों में ही पैदा हुए, ऐसे लाखों करोड़ों फर्जी नामों की आड़ में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम भ्रष्टाचार में जुटा था। आज देश के प्रयासों से, आप सभी के प्रयासों से ये सिस्टम बदला है। देश के करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। आप सब इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज ये पैसे गरीबों की भलाई के काम आ रहे हैं, उनका जीवन आसान बना रहे हैं। साथियों, जब समय सीमित हो तो यह तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी दिशा क्या होगी, हमारी कार्यशैली क्या होगी। आज चुनौती यह नहीं है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, बल्कि चुनौती ये तय करने में है कि जहां जो डेफिशिएंसी है वो कैसे दूर होगी। अगर हमारी दिशा सही होगी तो एफिशिएंसी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर डेफिशिएंसी होगी तो हमें वो परिणाम नहीं मिलेंगे जिसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। आप याद करिए, पहले डेफिशिएंसी की आड़ में हर सेक्टर की छोटी से छोटी चीज को कंट्रोल करने के तरीके बनाए जाते थे, लेकिन आज वही डेफिशिएंसी एफिशिएंसी में बदली है। आज वही एफिशिएंसी पॉलिसी से जुड़ी छोटी सी छोटी बाधाओं को पहचान कर रही है ताकि उन्हें हटाया जा सके। पहले ये सोच थी कि सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन अब सोच ये है कि सरकार सबके लिए करेगी। अब सरकार सबके लिए काम करने की भावना के साथ टाइम और रिसोर्सेज का एफिशिएंटली उपयोग कर रही है। आज की सरकार का ध्येय है नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। आज की सरकार की प्राथमिकता है
वंचितों को वरीयता। आज की सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तक जा रही है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स तक जा रही है। आज की सरकार देश के सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव न मानकर उन्हें फर्स्ट विलेज मानते हुए काम कर रही है। वाइब्रेंट विलेज योजना चला रही है। ये बीते वर्षों में हमारी सरकार की बहुत बड़ी पहचान रही है। लेकिन हमें एक और बात हमेशा ध्यान रखनी है। 100% सैचुरेशन के लिए हमें इससे भी अधिक मेहनत की, इनोवेटिव समाधानों की पल पल जरूरत पड़ेगी। अब जैसे डिजिटल इंडिया का इतना व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध है, इतना बड़ा डेटा सेट हमारे पास है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हर विभाग अपने अपने हिसाब से वही जानकारी, वही दस्तावेज मांगता है जो पहले से ही किसी न किसी डेटाबेस में मौजूद है। प्रशासन का बहुत बड़ा समय एनओसी, प्रमाण पत्र, क्लियरेंस, इन्हीं सब कामों में चला जाता है। हमें इनके सॉल्यूशन निकालने ही होंगे, तभी ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। मैं आपको पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का भी उदाहरण देना चाहता हूं। इसके तहत हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े डेटा लेयर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसका हमें अधिक से अधिक उपयोग करना है। हमें सोशल सेक्टर में बेहतर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए पीएम गतिशक्ति का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमें लोगों की जरूरतों को आइडेंटिफाई करने में और एजुकेशन में आने वाली मुश्किलों को दूर करने में मदद मिलेगी ही मिलेगी। इससे डिपार्टमेंट्स के बीच, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के बीच संवाद और सरल होगा। इससे हमारे लिए आगे की स्ट्रेटजी बनाना भी ज्यादा आसान होगा। साथियों, आजादी का ये अमृत काल, ये टाइम पीरियड भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जितने बड़े अवसर लेकर आया है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद, तेज गति से हासिल हुई सफलताओं के बावजूद, मैं इसे चुनौती क्यों कह रहा हूं, और मैं मानता हूं कि इस बात को आपको भी समझना होगा। आज भारत के लोगों के एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। विकसित भारत के लिए, व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए अब देशवासी और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। देश के लोगों की इस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए हम सबको, आपको पूरे सामर्थ्य से जुटना ही होगा। तेजी से निर्णय लेने होंगे, उन निर्णयों को उतनी ही तेजी से लागू करना होगा। और आपको एक और बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि आज, और ये मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप भी अनुभव करते होंगे, आज पूरे विश्व की भी भारत से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ये कह रही है कि भारत का समय आ गया है। इंडियाज टाइम हैज अराइव्ड। ऐसी स्थिति में
भारत की ब्यूरोक्रेसी को एक भी पल गंवाना नहीं है। आज मैं भारत की ब्यूरोक्रेसी से, भारत के हर सरकारी कर्मचारी से, चाहे वो राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में, मैं एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है। उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए। हो सकता है फील्ड में आपको किसी एक व्यक्ति के लिए कोई फैसला लेना हो, किसी एक समूह के लिए कोई फैसला लेना हो, लेकिन तब भी आप ये जरूर सोचें कि मेरे इस निर्णय से, निर्णय भले ही छोटा क्यों ना हो, मेरे इस निर्णय से देश का क्या भला होगा। यानी आपके लिए कसौटी देश हित ही है। और मैं आज भारत की ब्यूरोक्रेसी के लिए इस कसौटी में एक और बात जोड़ना चाहता हूं। मुझे विश्वास है आप इस कसौटी पर भी खरा उतरेंगे। साथियों, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता ही है और ये आवश्यक भी है, और ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। हर दल की अपनी विचारधारा होती है। संविधान ने हर दल को यह अधिकार दिया है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है, वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है। वो राजनीतिक दल नीतियों में इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा ताकि उसकी आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने। आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा करते थे, उसी ब्यूरोक्रेसी को उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है, क्योंकि अब अगर ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लुट जाएगा, टैक्स पेयर्स मनी तबाह हो जाएगा, देश के युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। साथियों, जो युवा बीते कुछ वर्षों में या पिछले दशक में देश की सिविल सेवा से जुड़े हैं, उन्हें मैं कुछ बातें विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। आप भी जानते हैं कि जीवन जीने के दो तरीके होते हैं। पहला, गेटिंग थिंग्स डन, और दूसरा, लेटिंग थिंग्स हैपन। पहला एक्टिव एटीट्यूड है और दूसरा पैसिव एटीट्यूड का प्रतिबिंब है। पहले तरीके से जीने वाले व्यक्ति की सोच होती है कि हां, बदलाव आ सकता है। दूसरे तरीके में विश्वास करने वाला व्यक्ति कहता है, ठीक है, रहने दो, सब ऐसे ही चलता है, पहले से भी चलता है, आगे भी चलता रहेगा।
वो तो अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गेटिंग थिंग्स डन, ये यकीन रखने वाले आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। जब उन्हें टीम में काम करने का अवसर मिलता है तो वो हर काम का ड्राइविंग फोर्स बन जाते हैं। लोगों के जीवन में बदलाव लाने की ऐसी ज्वलंत इच्छा से ही आप एक ऐसी विरासत छोड़ जाएंगे जिसे लोग याद करेंगे। आपको ये भी याद रखना होगा कि एक अफसर के रूप में आपकी सफलता इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि आपने अपने लिए क्या हासिल किया। आपकी सफलता का आकलन इस बात से होगा कि आपके काम से, आपके कैरियर से दूसरों का जीवन कितना बदला है। जिनका जीवन बदलने की जिम्मेदारी आपके पास थी, वे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए आपको ये हमेशा याद रखना है, गुड गवर्नेंस इज द की। जब पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस होती है, जब डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नेंस होती है, तो वो समस्याओं का समाधान भी करती है और बेहतर रिजल्ट भी देती है। गुड गवर्नेंस में जनता के प्रति जवाबदेही होती है। एक ही राज्य में एक जिला अच्छा परफॉर्म करे और दूसरा न करे तो इसके पिछले असली वजह गुड गवर्नेंस का अंतर ही होता है। हमारे सामने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का उदाहरण है। हमने जब जोश से भरे देश के युवा अफसरों को वहां नियुक्त किया, उन्हें गुड गवर्नेंस के लिए प्रेरित किया, तो नतीजे भी बेहतरीन आए। आज अनेक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेवलपमेंट पैरामीटर्स में देश के दूसरे जिलों से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आप इस पर फोकस करेंगे, पीपल्स पार्टिसिपेशन पर फोकस करेंगे, तो जनता में भी ओनरशिप का भाव, उसकी भावना और अधिक मजबूत होगी। और जनता जनार्दन किसी भी योजना की ओनरशिप ले लेती है तो अभूतपूर्व नतीजे आना सुनिश्चित हो जाता है। आप स्वच्छ भारत अभियान देख लीजिए, अमृत सरोवर अभियान देख लीजिए, जल जीवन मिशन देख लीजिए। इनकी सफलता का बड़ा आधार जनता द्वारा ली गई ओनरशिप है। साथियों, मुझे बताया गया है कि आप अपने जिले की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक डिस्ट्रिक्ट विजन एट 100 तैयार कर रहे हैं। ऐसा ही विजन पंचायत स्तर तक होना चाहिए। अपनी ग्राम पंचायत, अपने ब्लॉक, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने राज्य में हमें किन सेक्टर्स पर फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए कौन कौन से बदलाव करने हैं, हमारे जिले, ब्लॉक या पंचायत में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या उस स्तर तक ले जा सकते हैं। इनको लेकर एक स्पष्ट विजन हमारे पास होना चाहिए। आप अपने क्षेत्र में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई और स्वयं सहायता समूहों के बीच कड़ियों को जोड़ सकते हैं। आप सभी के लिए लोकल टैलेंट को प्रोत्साहित करना, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना, मैं समझता हूं कि ये समय की मांग है। साथियों, हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहते हुए मुझे 20 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। आप में से कई लोग बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं तो कहूंगा मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे साथियों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग पर कितना जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सिविल सर्वेंट के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इस अभियान को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। मेरा यह भी मानना है कि ट्रेनिंग और लर्निंग
कुछ महीनों की औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग और लर्निंग से जुड़ा क्वालिटी मटेरियल हर जगह हर समय उपलब्ध हो, इसके लिए आई गॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब सभी नए रिक्रूट्स को आई गॉट पर कर्मयोगी प्रारंभ के ओरिएंटेशन मॉड्यूल के साथ भी ट्रेन किया जा रहा है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को एक और बंधन से मुक्ति दिलाई है। ये बंधन का प्रोटोकॉल और हायरार्की का बंधन। आप जानते हैं कि हायरार्की के बंधनों को तोड़ने की शुरुआत भी मैंने खुद की है। मैं लगातार सेक्रेटरी से लेकर के असिस्टेंट सेक्रेटरी तक से मिलता हूं। मैं ट्रेनी अफसरों के साथ मुलाकात करता हूं। हमने डिपार्टमेंट के भीतर हर किसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए, नए आइडियाज के लिए केंद्र सरकार में भी चिंतन शिविर को बढ़ावा दिया है। हमारे प्रयासों से एक और बड़ा बदलाव आया है। पहले वर्षों तक राज्यों में रहने के बाद ही अधिकारियों को डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव मिलता था। ये किसी से और किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगर इन अधिकारियों के पास केंद्र सरकार में काम का अनुभव ही नहीं होता तो वो केंद्र के प्रोग्राम्स को जमीन पर लागू कैसे करेंगे। हमने असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम के जरिए इस गैप को भी भरने का प्रयास किया। अब युवा आईएएस अपने कैरियर की शुरुआत में ही केंद्र सरकार में काम करने का, उनके अनुभव लेने का मौका मिलता है। सीनियर मोस्ट लोगों के साथ उसको कुछ सीखने को मिलता है। हमें इस तरह की इनोवेशंस को आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों को परिणामों के लिए और शिखर पर ले जाने के लिए निरंतर कोशिश करनी है। साथियों, विकसित भारत के लिए 25 वर्षों की अमृत यात्रा को देश ने कर्तव्य काल माना है। आजादी की शताब्दी, देश की स्वर्ण शताब्दी तब होगी जब हम कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता देंगे। कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है। ये समय तेजी से बदलाव का समय है। आपकी भूमिका भी आपके अधिकारों से नहीं, आपके कर्तव्य और उनके पालन से तय होगी। नए भारत में देश के नागरिक की ताकत बढ़ी है, भारत की भी ताकत बढ़ी है। इस नए उभरते भारत में आपको अहम भूमिका निभाने का अवसर मिला है। आजादी के 100 साल बाद जब इतिहास आकलन करेगा तो आपके पास अवसर है कि उसमें एक प्रमुख नाम आपका भी हो। आप गर्व से ये कहें कि मैंने देश के लिए नई व्यवस्थाओं के सृजन में भूमिका निभाई है, व्यवस्थाओं को सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि आप सभी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को विस्तार देते रहेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग हर पल हमारी कोशिश रहनी चाहिए, खुद के लिए भी, साथियों के लिए भी और व्यवस्था के लिए भी। हमें उत्तरोत्तर नई ऊंचाइयों को पार करने की स्थितियों को प्राप्त करता ही रहना होगा। मुझे विश्वास है कि सिविल सर्विस डे ये वार्षिक रिचुअल नहीं है। ये सिविल सर्विस डे संकल्पों का समय है। ये सिविल सर्विस डे नए निर्णयों का समय है। निर्णयों को निर्धारित समय में कार्यान्वित करने का उत्साह और ऊर्जा से भरने का अवसर है। इस अवसर से एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नई शक्ति, नया सामर्थ्य, नया संकल्प यह लेकर के हम चलेंगे तो जिन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं उन सिद्धियों को हम खुद छू करके देखेंगे। इसी विश्वास के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। आभार उनके दूरदृष्टि और उस नेतृत्व के लिए भी जो नए भारत, विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव बनी है, जिस पर देश को गर्व है और जिस पर दुनिया को भरोसा है।
हृदय से आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। साथ ही आभार माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आभार प्रधानमंत्री महोदय के सलाहकार डॉक्टर Over there at the Civil Services Day event, the Prime Minister in his speech talking about the fact that this is a time for India to essentially reach new heights. The Prime Minister talking to civil servants and telling them about good governance and also establishing the fact that good governance is the way forward for this country to progress. Just a quick reminder, the Prime Minister will be at the Republic Summit on the 26th of April and he will be speaking about time of transformation. Now it appears that there's been a setback for DK Shivakumar, the Karnataka Congress chief. The High Court in Karnataka has rejected his plea against a CBI probe. DK Shivakumar has hit out at the BJP, alleging that this is the BJP misusing its power. DK Shivakumar has further said that he will approach a higher court. Now, let's go across to Aneri, I think, who has more details on this. We'll just get in a bit, but DK Shivakumar over there saying that he is going to go to a higher court in this case. Also, what we are given to understand is that he has spoken about this, so let's quickly listen in. Now that the High Court has rejected your plea, what would be your next legal move? Would you be approaching the higher courts as well? Definitely, I will approach the higher courts. I'll fight till the last breath. I'll fight it out. I will fight it out. I believe in the court of law. I believe that they have done a great injustice. They could have not given permission. There was no such thing. Everything is transparent. Nothing wrong I have done. I will face it. Well, that of course was the first response of DK Shivakumar after the setback that he's received in court. Aneri is reporting on this. Aneri, DK Shivakumar, of course, painting himself to be a political casualty in a sense, you know, saying that this is vendetta. Well, that's right, Nupur. We have been seeing that as it was a big setback, the High Court judgment comes as a big setback to DK Shivakumar. Well, now we also see that DK Shivakumar has hit it out at the Bharatiya Janata Party, says that all this is a political tactic they are trying to do. But however, we will not, we will also follow the law of the land. जो आप लोगों ने संकल्प लिया है वह सच में बहुत ही प्रेरणादायी है। हम स्वामी जी के जीवन को जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने देश में, समाज में सभी प्राणियों को जो दृष्टि और दिशा दी, उसके माध्यम से हम जिसे कहते हैं कि प्रकाशमय होकर समाज के अपने बंधुओं को उनकी सेवा करके सारा समाज मंगलमय रहे और देश आगे उन्नति करे, प्रगति करे, उसकी उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी। सत्य की खोज में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जीवन लगाया और उस जो ज्ञान उनका था, उस ज्ञान को उन्होंने समाज को समर्पित किया। मुझे बेलूर मठ में भी जाने का सौभाग्य मिला और अन्य जगहों पर भी, जहां भी हमारे चाहे रामकृष्ण मिशन हो या विवेकानंद जी का आश्रम हो, सभी स्थानों पर जाने की हमेशा इच्छा रहती है। और आज मेरी ये इच्छा यहाँ पर हमारे सांसद और हमारे भारत सरकार में मंत्री भगवंत कुबा जी ने पूरा किया है। उनका भी मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने बीदर आने पर मेरा सबसे पहला कार्यक्रम विवेकानंद आश्रम में रखा। जो काम आप कर रहे हैं, फिर चाहे वो
शिक्षा के जगत में हमारे बच्चों को उनका हुनर बढ़ाने के लिए, उनका टैलेंट बढ़ाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको कंपटीशन के लिए तैयार करने के लिए वह बहुत ही उत्तम काम है। और एक Well, the BJP state president of Tamil Nadu, K. Annamalai, has shared an audio on Twitter. Now, in this audio that has been shared with Twitter, there's a conversation that is playing out with a journalist where the state finance minister reveals that the chief minister's son Udayanidhi and his son-in-law Sabir Ehsan have accumulated 30,000 crores. Mr. Ken Nehru, merely 3 crore in 2021. Today he is worth 2,495 crore. That only shows the kind of rampant corruption being done in the state of Tamil Nadu under the guidance of the chief minister. और सबसे अहम बात है जो आपके सामने मैं सुनाना चाहता हूं आप लोगों को कि आप देखिए इस पूरे करप्शन के बारे में जिससे हम फाइट कर रहे हैं. हाउ मेनी इनिशिएटिव द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज अंडरटेकन टू एलिमिनेट दिस corruption from the society because it is impacting the common man. They are looting the wealth of the common man. We had heard the Plasi plunder. Now we have seen the Stalin plunder these days in Tamil Nadu because आम आदमी सफर कर रहा है, आम आदमी का पैसा ये लूट रहे हैं. आप जिनकी 3 करोड़ 2021 में वर्थ है वो आज 2495 करोड़ की है, जिसकी कुछ नहीं वर्थ है उसके आज वैल्यू की वो 21-23 करोड़ से जो है वो 5,444 करोड़ हो जाता है. उससे समझ में आता है कि किस तरह का करप्शन हो रहा है. लेकिन इस चीज की जो जानकारी देने वाला कौन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको मैं सुनाना चाहता हूं कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं थायागराजन, पीटीआर थायागराजन जी, वो एक जर्नलिस्ट से जब बात कर रहे हैं, व्हेन ही इज टॉकिंग टू ए जर्नलिस्ट, the finance minister, who is the trusted lieutenant of the chief minister of Mr. Stalin, when he was talking to a journalist, he revealed, it is not me who is talking about it. I will make you listen to this audio conversation between the journalist and the finance minister of Tamil Nadu, who is a very, very trusted lieutenant of Stalin. He himself said that Mr. Stalin's son-in-law, Sabasiran, and his son Udayanidhi Stalin, both put together, have made 30,000 crore merely in 1 year. How much? 30,000 crore एक साल में उन्होंने बनाया है. ये दोनों का नाम उनके फाइनेंस मिनिस्टर ले रहे हैं कि 30,000 करोड़ एक साल में उनके सन इन लॉ सेबासिरन और उदयनिधि स्टैलिन दोनों ने मिलकर बनाया है. और चिंता क्या है आप ये सोचिए, चिंता उनकी ये है कि पैसे को कहां छुपाएं, कहां रखें, कैसे नहीं पकड़ाए. I mean, he is worried the way to hide this money which has been made through unfair practices. I mean, the finance minister is saying that he has made 30,000 crore, and where to hide this money? I mean, they are struggling. They are making money because there is a policy. There is a chief minister who is only following a policy of corruption. Obviously, every day they are making 10, 20, 30 crore every day, but they don't know how to hide it because it is unprecedented that they have made such. Any government has made this kind of corruption and made this kind of money in 1 year, and this is what they are up to. और ये किसका पैसा लूट रहे हैं, ये किसका नुकसान करे? ये आम नागरिक जो है तमिलनाडु का, कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट, उसका पैसा लूट रहे हैं. दिस मनी इज लूटेड बाय दिस गवर्नमेंट विच एक्चुअली बिलोंग्स टू ए कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट. ये गरीब आदमी का पैसा लूट रहे हैं. उनके लिए जो उनके इस पे खर्च करना था वो आज
तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और उनके 10-12 जो करीबी साथी हैं, the close friends of Tamilnadu's chief minister, around 10-12 people, put together, they have made enormous amount of money through unfair practices. This is evident from the fact that this only suggests the kind of wealth they have created in last 2 years. That is a testimony of the corruption they have committed and how they have made money. आज मैं जो आपको बोल रहा था, मैं उसका वीडियो आपको सुनाता हूं और आपके सामने आपको पता चलेगा कि आखिर वो पैसा कैसे इतना बनाया है। इसकी जानकारी आपको अभी 1 सेकंड में मैं देता हूं। मैं बताता हूं 1 मिनट भी। And now it's getting to be a problem how to handle it, how to get it, how to give it there. Working nature should be very good. Should be paid back because it's one. So आपने सुना इसमें क्या कह रहे हैं? फिर से मैं आपको जो बात कर रहे हैं उसको सुना भी देता हूं। आपको सुनाया लेकिन मैं फिर से उसको आपके सामने कहता हूं। They are saying that the Tyagarajanji is talking to a journalist and is saying that Mr. Udayanidhi or Seba Sirasan, they have made more money in 1 year than their grandfathers have made. Means, as a family is known for corruption, that is what he is confirming. First thing that is confirming that the family is known for corruption. It is in their gene, it is there in DNA that they do corruptions whenever they are in power, and they loot the assets of which actually should belong to a common man. They are looting the state assets, and this is something which is known even for their grandparents that they were making this kind of correction. But today he is also saying that they have whatever money they have made, उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा उनके grandparents से बनाया तो उससे ज़्यादा पैसा आज वो बना रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि 1 साल में इतना किसी ने पैसा नहीं बनाया जितना इन्होंने बनाया, 30,000 करोड़। ये हम नहीं कह रहे, सब ये उनके त्यागराजन जो मिनिस्टर है वो कह रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि आज ये प्रॉब्लम आ गई है कि इस पैसे को कहां छिपाएं, वेयर टू हाइड दिस मनी विच इज बीइंग मेड बाय these two people through unfair practices. Every day 10, 20, 30 crores he is making. This is what the finance minister is saying. Now, also I would like to bring to your attention कि आपको डीएमके फाइल्स के बारे में पता ही है, जहां पर 3-4 करप्शंस के बारे में हमने बात की और हमने उनसे सवाल पूछा है कि आप ये बताइए कि दुबई की एक कंपनी जो है जिसके साथ उन्होंने एक नोबल स्टील के साथ उन्होंने एक एमओयू साइन किया है। स्टैलिन साहब खुद गए थे दुबई और उन्होंने एक एमओयू साइन किया नोबल स्टील। अब नोबल स्टील कौन सी कंपनी है, इसका कोई बताएगा? नोबल स्टील में 1,000 करोड़ क्यों इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है? Mr. Stalin has signed an MOU with Nobel Steel based in Dubai. Nobel Steel has agreed to invest 1,000 crore in Chennai. We really want to understand, and we want DMK to tell us the source of income, source of money for Nobel Steel, because Nobel Steel has many directors which belonging to DMK party, including Mr. Abdullah. There are some more. Udayanidhi Stalin is a part of this, and Mr. Mahesh. They were part of this Nobel Steel. So who is the actual promoter of Nobel Steel? What is the source of
revenue for Noble Steel and how they are making and what is the consideration for their making investment in India, and they have signed an MOU. हम उनसे समझना चाहते हैं कि नोबल स्टील का आखिर क्या मकसद है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का, वो किसका पैसा है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है नोबल स्टील का, और इतना पैसा, इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं है कि उस नोबल स्टील यहां पर इन्वेस्ट कर सके। लेकिन उसके पीछे की जो बात है, जो पर्दे के पीछे है, कि इसके पीछे उदय निधि जी जो उनके स्टैलिन के सन है वो उस पर डायरेक्टर रहे हुए हैं, मिस्टर महेश जो उनके पार्टी के बड़े लीडर हैं वो उनके उस पर डायरेक्टर रहे हुए हैं, और मंत्री भी रह चुके हैं। और ये सारे लोग जो और अब्दुल्ला, मिस्टर अब्दुल्ला जो अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी उसके जो है डायरेक्टर रह चुके हैं। ये लोग उस पर डायरेक्टर है। तो आखिर ये कड़ी आपको समझ में आ रही है कि कहां से पैसा ये आया है और कहां इसको लाया जा रहा है। इस सारा चीज जो है, जो मनी लॉन्ड्रिंग, रॉन्ग ट्रिपिंग जो हो रहा है, वो आपके सामने है। हमने उनसे सवाल किया है लेकिन उनकी चुप्पी बंदी है, इसलिए इस पे जवाब नहीं दे रहे। दूसरा चीज, आपको, मैं खुद एक बैंकर हूं, मुझे मालूम है कि कुछ बैंक दुनिया में जाने जाते हैं और कुछ कॉन्टिनेंट जाने जाते हैं जहां से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होती है। वैसे एक ऑस्ट्रेलियन एक बैंक है और ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर, फाइनेंशियल क्राइम रेगुलेटर्स ने इस बात को कहा है कि वेस्ट बैंक जो है वो जाना जाता है बहुत सारे इरेगुलरिटीज जो करती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग करती है, उसके लिए वेस्ट बैंक जाना जाता है। खास के अफ्रीका में ऐसे फर्जी ब्रांच खोलते हैं और वहां से जो है कैश लेके उसको जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और इसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे जो ऑस्ट्रेलियन जो फाइनेंशियल क्राइम जो रेगुलेटर है उसने ऐसी बात कही है। अब वेस्ट बैंक का जो ने 2008 में जो सेंट जॉर्ज बैंक जो लंदन में है उसको मर्ज कर दिया था। सेंट जॉर्ज बैंक में एक डायरेक्टर है श्रीनिवास, और जो अभी फिलहाल जो कंपनी खुली है, जो उदयनिधि स्टैलिन ने जो वहां पर खोली है कंपनी, सबरिसन एक कंपनी खोली है जिसका नाम है स्पेसटेल एंड वॉइसटेक यूके। इसका ऑफिस जो है वो 790 यूएक्स ब्रिज, मिडिलसेक्स, लंदन, ये ऑफिस है। और यहीं पर भी वो जो सेंट जॉर्ज बैंक का भी एड्रेस है, जिसमें दोनों में कॉमन डायरेक्टर है। श्रीनिवास यहां भी डायरेक्टर है और सेबरिसन के साथ ये कंपनी में जो कंपनी स्पेसटेल एंड वॉइसटेक है, दोनों में ये भी डायरेक्टर है। तो ये समझ में आता है कि आप नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। आई विल टेल यू सेम थिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, दैट they have said Mr. Sibarisan, the son-in-law of Mr. Stalin, has set up a company in two companies in UK. The name of the company is Spacetel and Voicetech. Both are set up have been set up in UK. Their office is 790 UX Bridge, Middlesex, London. And what is common, that St. George Bank's office is also in the same building. And there is one person who is a common director between the two entities. Srinivasan, who is a very close friend of Sebarisan, is also director in St. George Bank, and he is also director in the two companies which has been set up by Sebarisan, who is the son-in-law of Mr. Stalin. We want to know what is the innovative way. Now they are resorting to innovative methods of money laundering. And we have exposed that the kind of investment they have made through this by setting up these two companies are only illegal, and they are routing their ill-gotten fund through this route. And this is something which has been also spoken by the Australian financial crime regulators, because the St. George Bank has been merged or owned by Westpac Bank, and Westpac Bank is known for doing very many money laundering transactions through Africa. So we want to understand from them what is the arrangement they have with Srinivasan and why they had to set up companies in UK, because they will have to answer, and especially the association with Srinivasan, because St. George Bank is known for money laundering, is something which I am not telling, not my party officer saying, not my colleague Annamalai saying, but this has been stated by the Australian financial crime regulator.
Third question, which my colleague, State BJP President Mr. Annamalai has also raised, which I want to also put it across to you. उन्होंने ये भी पूछा है कि जो मेट्रो रेल जो है, चेन्नई मेट्रो रेल, उसमें आखिर किस तरह का अरेंजमेंट किया गया था एस्कॉम प्रोजेक्ट्स के थ्रू, एस्कॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू, कि आपने मित्सुबिशी जैसी कंपनियों को साइडलाइन किया, आपने बहुत सारे पॉलिसी गाइडलाइंस चेंज किए और इवेंचुअली आपने जो है एक ऐसी कंपनी को जो ब्राइब करने के लिए मशहूर है, जानी जाती है कि ब्राइब करके थ्रू मिडिलमैन ब्राइब करती है, और उसमें 200 करोड़ जो है उस वक्त डीएमके को दिया गया, उसके बेसिस पे ये उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और इसकी अब जानकारी, जैसा हमारे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट उन्होंने कहा है कि इसकी जानकारी सीबीआई को दी जा रही है, सीबीआई है इसको फर्दर हम उनसे आग्रह करेंगे कि सीबीआई फर्दर इन्वेस्टिगेट करे, इसलिए कि ये बहुत ही जो बड़ा करप्शन उस वक्त हुआ था, और इसकी जानकारी इसलिए कि एग्जिम की पॉलिसी को भी उन्होंने साइडलाइन करते हुए ये करप्शन किया था। सो वी ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज समथिंग व्हिच हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड बाय आवर बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, दैट मिस्टर अन्नामलाई, दैट व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट दे हैड, the DMK government had with Alstom projects, because Alstom project is known to use a conduit, a middleman, to bribe the authorities, and it has been heard that they had bribed 200 crore to win these projects. While winning this project, DMK had to violate many guidelines of EXIM, and also they have to accommodate or put up a policy which actually suited Alstom project, and somehow the most competent bidder was Mitsubishi, which has been sidelined by making this kind of amendment in the policy itself. So eventually the contract went to Alstom project, and they had received a bribe of 200 crores. So we want to approach CBI with all the information which has been gathered, and Mr. Annamalai has already stated that he is seeking appointment of CBI, and he will hand over all the information which he has, so that CBI can investigate thoroughly and find out who is the culprit and what kind of arrangement they had. Also, I want to raise this that Mr. Udayanidhi Stalin, जो आज के दिन में बहुत मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर भी है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर भी है, वो 300 का जो रेड जाइंट करके जो कंपनी है, उसमें 300 करोड़ कहां से आया था, आज उसकी वर्थ 2000 करोड़ कैसे हो गई, आखिर ये कहां से सोर्स इसका, इस सोर्स के बारे में भी हमने पूछा है, हमारे अन्नामलाई साहब ने पूछा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। वी ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम डीएमके एंड मिस्टर स्टालिन एंड मिस्टर उदयनिधि that the source of 300 crore which has been put in Red Giant, which is the sole distributor in Chennai, in Tamil Nadu today, and there is a production house of Sun, put together they are actually monopolizing the film industry in Tamil Nadu. Also, the worth of 300 crore is, now they have stated that it is 2000 crore. We want to understand from where this 300 crore had come, 300 crore come, the source of this 300 crore. We have posed this question, but there is absolutely no reply from DMK. So we want to reiterate that please tell us what is the source of 300 crore, because we want to understand, the people of Tamil Nadu wants to understand that how you have put in 300 crore in Red Giant, which is worth 2000 crore today. So, Mitro, I just wanted to highlight a few the corruptions के बारे में आपके सामने लेकर आया था, इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम करप्शन को जड़ से उठाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने कई जो आपके सामने है, चाहे और वो खासकर यूपीए के पार्टनर्स है। आप जानते हैं कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वाड्रा जी हो, चाहे परिवार के और लोग हों, जिस
All right, so that is the news briefing by BJP over the tape that is now going viral as they're escalating the corruption charges against DMK. Varshini is joining us live on the broadcast. Varshini, BJP clearly upping the ante when it comes to levelling charges of money laundering and posing some very serious questions in connection with the DMK files over specific companies and how money is being laundered. We understand how the DMK has reacted so far, seeking damages from BJP over DMK files, and how Udayanidhi Stalin has, not made any statement per se, but gone legal in this fight. But with the BJP now upping the ante, how is the DMK set to react? Well, if you see, Suvesha, the DMK is particularly not ready to answer for any of these questions that are being put forth. Rather, it's only defamatory charges that are being put against BJP, particularly the state president Annamalai, who has been putting forth all these allegations for the past 1 week. And the DMK organizational secretary initially spoke about, how this is definitely defamatory, and these kind of allegations are malicious, is what he had stated. He also later on sent a legal notice to Annamalai through the advocate and DMK MP Wilson, where a detailed list of allegations that were put forth by Annamalai was written, but it was not given an explanation or about how they are defending themselves has never come out from either of these leaders who have sent legal notices to Annamalai. Now, if you see, for the past couple of days, this audio tape which is doing the rounds on Twitter and other social media handles, where it is alleged that the finance minister of Tamil Nadu, PTR, has been speaking about how the son and the son-in-law of the chief minister, Minister Udayanidhi and Shabarishan, have so much money, and that they are confused as to how to make sure they are safe. Therefore, it's once again, it is igniting the fire of the DMK files that Annamalai had initially begun, and the DMK is yet to give a solid, concrete response to all these allegations that are being put forth, Suvesha. All right, and Varshini, the news conference that the BJP just held, also a tweet to the same effect of the video that was posted by Annamalai. Let's take a look at that. Somebody has realized they made more money over here than they spent over in the labs. And now it's getting to be a problem how to handle it, how do you get it, how do you get it there. And all being made into impairing people. Simply we create back the because of one. I mean, where the people not being effectively not making something prostitution. All right, so this is the purported video that has gone viral, which the BJP is now holding against DMK, also putting out details of the DMK files as have been released by Annamalai, escalating the fight, levelling corruption charges. We really wait and watch how the DMK reacts to this. For the moment, we have to slip into a very short commercial break. Also on the other side, the other big stories that we are tracking for you this afternoon, as Ajit Pawar stumped the opposition by saying charges against Adani have not been established yet. Also, a day after 5 were martyred in the Poonch terror attack, NIA team is set to visit the site to collect evidence. इक्कीसवीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती, और यही समय है हम विजय की ओर बढ़ चले। The Republic Media Network, as you know, is hosting its flagship annual event, the Republic Summit 2023. Prime Minister Narendra Modi will be addressing all of us at the Republic Summit on the theme of
time of transformation. It is without doubt his visionary leadership that has seen the country implement direct benefit transfer for 11 times as many schemes than we did 8 years back. But much more will happen. My belief is, our network's belief is, that the biggest transformations are yet to come. So when the Prime Minister addresses us all, and that is on the evening of the 26th of April, we will all eagerly await to hear his vision of how we can use this moment of transformation to catalyze even faster our move to being a developed nation. It's a matter of immense pride for all of us at the Republic Media Network to share with you that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be our chief guest at this year's Republic Summit to be held in Delhi on the 25th and 26th of April on the theme of Time of Transformation, a theme which is in line with his vision and his determination to make India a developed nation. And the reality is this, that the Prime Minister has led an incredible transformation of this country from 2014 till today. My belief is, our network's belief is, that the biggest transformations are yet to come. And that is why all eyes will be on Prime Minister Narendra Modi's much-awaited address at the Republic Summit on the evening of the 26th of April. 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती और यही समय है हम विजय की ओर बढ़ चले। The Republic Media Network, as you know, is hosting its flagship annual event, the Republic Summit 2023. Prime Minister Narendra Modi will be addressing all of us at the Republic Summit on the theme of Time of Transformation. It is without doubt his visionary leadership that has seen the country implement direct benefit transfer for 11 times as many schemes than we did 8 years back. But much more will happen. My belief is, our network's belief is, that the biggest transformations are yet to come. So when the Prime Minister addresses us all, and that is on the evening of the 26th of April, we will all eagerly await to hear his vision of how we can use this moment of transformation to catalyze even faster our move to being a developed nation. It's a matter of immense pride for all of us at the Republic Media Network to share with you that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be our chief guest at this year's Republic Summit to be held in Delhi on the 25th and 26th of April on the theme of Time of Transformation, a theme which is in line with his vision and his determination to make India a developed nation. And the reality is this, that the Prime Minister has led an incredible transformation of this country. And cutting across to the latest after the Poonch terror attack, it is the BJP that is holding a protest in Jammu over that attack where 5 of our soldiers were martyred. Dogra Front that is holding protests in Jammu over the Poonch terror attack. Remember, investigation is underway and the entire area has been cordoned as NIA is also set to reach this afternoon to join the probe. But for the moment, I want to cut across to my colleague Gursimran, who's tracking all the details on the ground. Gursimran, anger is mounting over 5 of our soldiers martyred in that attack in Poonch yesterday. Meanwhile, BJP also holding these protests. Take us through the details.
See, BJP is holding protests in Jammu as well as in Poonch, and there are several other groups that are holding protests in various parts of the Union Territory of Jammu and Kashmir. And the people are engaged over the way the brutal killing of the soldiers has happened. This was a barbaric act of terror that has happened, but this also raises a concern for the security forces as well, because time and again this similar group, what it seems, has been able to carry out the act of terror, be it the Dhangri terror attack in 2023 starting, be it the yesterday's incident in the Batadoria, or 2021 attack in which we lost 9 of our Jawans. So the people are anguished and they want that the Pakistan be decimated as such that they don't dare to come back with the terrorists into the Indian territory, and that's why they are holding the widespread protest across the Union Territory of Jammu and Kashmir. Suesha. Absolutely, Gursimran, and we continue to track every detail on the ground when it comes to the probe that is continuing, as it is not just senior officials of the Indian Army and IPS that are on the ground, but also NIA that is set to join the investigation from this afternoon, as we also understand bomb disposal squads and forensic experts who are at that very spot getting details and gathering evidence. On that note, Gursimran, we'll keep coming back to you for further updates. For the moment, a short commercial break. A quick check of what's lined up on the other side. Amit Shah is on mission Karnataka as he's all set to campaign and hold a mega road show in Bengaluru. RP Sanjeev Goenka Group presents Republic Summit, Time of Transformation. Co-powered by Raven Group, manufacturers of electric cables and solar systems. Bharosa Rakho, Surakshit Raho. Mine Super App and beyond. Knowledge partner, Amrita Vishwavidyapeetham, Education for Life, Education for Living. Infrastructure partner, Rungta Steel TMT Bar, Ekdam Solid. MSME partner, You Grow Capital. Amity faculty have filed over 1800 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. It's a matter of immense pride for all of us at the Republic Media Network to share with you that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be our chief guest at this year's Republic Summit to be held in Delhi on the 25th and 26th of April on the theme of Time of Transformation, a theme which is in line with his vision and his determination to make India a developed nation. And the reality is this, that the Prime Minister has led an incredible transformation of this country from 2014 till today. My belief is, our network's belief is, that the biggest transformations are yet to come. And that is why all eyes will be on Prime Minister Narendra Modi's much-awaited address at the Republic Summit on the evening of the 26th of April. 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती, और यही समय है हम विजय की ओर बढ़ चले। The Republic Media Network, as you know, is hosting its flagship annual event, the Republic Summit 2023. Prime Minister Narendra Modi will be addressing all of us at the Republic Summit on the theme of Time of Transformation. It is without doubt his visionary leadership that has seen the country implement direct benefit transfer for 11 times as many schemes than we did 8 years back. But much more will happen. My belief is, our network's belief is, that the biggest transformations are yet to come. So when the Prime Minister addresses us all, and that is on the evening of the 26th of April, we will all eagerly await to hear his vision of how we can use this moment of transformation to catalyze even faster our move to being a developed nation. It's a matter of immense pride for all of us at the Republic. Was there an email that was sent to you from Shashi Tharoor asking for help on? You show me the mail. No, the fact is that you are saying there was an email on. Do you continue serving the army with the same zest that you have always? Oh yes. The
पूरा रिहायशी इलाका इसको ये ना सर्च ऑपरेशन इस टाइम चल रहा है। डीजीपी ने खुद कहा कि 10 लोगों की पुष्टि हमने कर दी है, जो 10 लोग मारे गए। ये भारत के लोगों की जीत है। स्थिति तनावपूर्ण है। ठीक लाल किले के सामने मैं इस वक्त मौजूद हूं। कथित लोग हैं जो दरअसल यहां इन्होंने पूरा उत्पात मचाया हुआ है। सर, आज राज्य के मुख्यमंत्री है, इतने लोगों की डेथ हो गई है सर, लेकिन कोई जवाब नहीं है सर। अब तक एक्शन को लेकर भी कुछ नहीं किया सर। Shankar, are you apologetic or not? Shankar, are you apologetic or not? These are the visuals of Shankar Mishra accused who's being taken for the medical and then towards. A very good afternoon. The countdown has begun. India's biggest news event is back. The third edition of the Republic Summit will be held in the national capital this month. The biggest names, the biggest newsmakers, the biggest agents of change and transformation in India will be at the Republic Summit once again this year. So stand by for what will be by far India's biggest news event by miles. India's transformation is for us to celebrate together, to take pride in it together. We are also delighted to announce that our chief guest at this year's Republic Summit is going to be Prime Minister Narendra Modi. The Prime Minister is taking out time of his busy schedule to address us all on the theme Time of Transformation. So join us at the biggest news event of the year as some of the most foremost thought leaders ideate on the challenges, solution and projections that are all likely to catalyze India's growth story. On that note, let's begin with the top headlines this afternoon. 4 days to go for the biggest news event, Republic Summit. The biggest agents of change and transformation will be at the Republic Summit. Prime Minister Narendra Modi to be the chief guest at a Republic Summit on the 26th of April. Ajit Pawar stumps the opposition by saying charges against Adani not established yet. High Court dismisses DK Shivakumar plea. CBI will continue to probe him in disproportionate assets case. A day after 5 martyred in Poonch terror attack, NIA team to visit the site to collect the evidence. Stalin government faces corruption allegations. BJP launches mega attack, shares viral audio to back DMK files charge. Alright, we begin first with the latest that's coming in on the Poonch terror attack in which 5 of our Jawans were martyred. Now, intel sources telling the public that 3 to 4 groups of Pak terrorists are active and operating in Poonch and Rajouri areas of Jammu. So that's the latest coming in. We're given to understand that terrorists are active and are operating in Poonch and Rajouri. Gursimran, of course, tracking the latest, joining us live from Poonch. Gursimran, while we understand that the NI team would be visiting the location this afternoon, tell us about these terrorists which we understand are still active in several of these locations in Jammu. See, what we're getting to know that there are 3 to 4 groups of the terrorists that are active in the Rajouri and the Poonch area, and most of them are the Pakistani terrorists that are getting the help from the local overground workers to operate in the area. The number of the terrorists counts somewhere to 8 to 12 is the number in the 3 to 4 groups the terrorists are operating in the area, and these terrorists are operating very smartly when it comes to their tactics. What they are doing is that they are carrying out the act of terror and then they are going into hidings. The natural caves in these areas, especially
especially in the area of the Bhataduriya, the Surankot area and the nearby areas, they help as an hideout for these terrorists, and no doubt they are getting the local support, but they are using the local support so tactically that their local support system doesn't come under the radar of the security forces, and that has been the sole reason that if we go by the first major terror attack of the Bhataduriya that has happened first in the Dera Ki Gali in 11th October 2021, followed by the 15th October 2021, in which 5 and 4 Jawans, total of 9 Jawans lost their life in the ongoing, in that very operation. And the terrorist, one terrorist, he managed to survive in the area for more than 3 months. He was neutralized in the next year's February. So this has been the modus operandi of the terrorists, Pakistani terrorists that are active here, and they are proving to be very lethal, deadly for the security forces as they go into hiding for a couple months, even for a year's time, and then they come back. We have seen the Dangri terror attack taking place in which the 7 Hindus were killed by the terrorists, and then there is no clue about the whereabouts of these terrorists, where these terrorists have gone actually, where have they come from, where they got the weapons from. All these remains the question even after the 4 months of that incident taking place. And another incident has happened yesterday wherein 5 Jawans of the Indian Army, they were martyred in an attack, and what we are getting to know that it was a planned attack. The recce of the area was done. So possibly it can be said that there is an intelligence failure that has happened, but it has to be seen that how the course correction can be done. Gursimran, quickly, if you can take us through the exact sequence of events that happened yesterday when that grenade was lobbed at the army vehicle. If you can tell us what exactly was the modus operandi of these terrorists. See, what it seems as of now, because the grenade angle is coming, it seems that first the grenade was lobbed to stop the vehicle, then the firing was done. It can be vice versa if the grenade is not used. Just in case it was not grenade but an IED that was planted on the vehicle, first the IED was triggered and then the Jawans were fired upon, or first the Jawans were fired upon and then the IED was used. This has been the sequence, but what we are getting to know that there was at least presence of 2 to 3 terrorists when this terror attack has happened, and it was within the span of 2 to 3 minutes that they came, they started firing at the Jawans, they carried out this blast, the army vehicle went into the flames and the terrorists managed to escape because it was the time all the vehicles in the nearby area, they reached the spot, and so does the Indian Army, because it is not the brigade of the Indian Army, the BG brigade is not at a far off distance, it is only at the 10 minutes distance. So this all has happened yesterday, post that the searches have been launched, but there has not been any major clue when it comes to the location of the terrorists, those who have carried out the brutal act of terror yesterday. Samiksha. All right, Gursimran, thank you for the moments. So Gursimran there, of course, reporting live from the Poonch terror site. Remember, the army vehicle was attacked in a terror attack last afternoon in which 5 of our Jawans lost their lives. All right, moving on to the latest that's coming in on the Prayagraj shootout. We understand that a new video has surfaced in which Atiq's wife, Shaista, is seen. Now, remember, the wife of Atiq, the Mafia Don, who was shot dead on Saturday evening, has been missing since Saturday evening, and that's the first video on your screens right now. The woman in yellow, she is said to be the wife of the deceased Mafia Don, Shaista, who is seen in this video. We're given to understand that she could surrender in the coming days as per sources. Let's go across to Piyush Shori, who's joining us live from Prayagraj. Piyush, if you could give us more details on this new video that has surfaced where we see Shaista, the wife of the deceased Mafia Don. Anything you're learning as to when could Shaista, the wife of the deceased Don, could surrender before the police? Well, there are a lot of speculations and counter theories that are being propagated over here in Prayagraj of whether Shaista Parveen, the wife of deceased Don Atiq Ahmed, would surrender or not. Today, there were again speculations that she would surrender, following which there was heavy security that was deployed at the district court over here in Prayagraj. However, so far we have come to know that she has not surrendered, but yes, there is a lot of organization of Prayagraj police which has been done to make sure that before Shaista Parveen gets surrender, she gets arrested. So yes, as of now, there has been no particular incident like this as of now to understand that will she surrender or not. But yes, because
because the things are getting difficult for Shaista Parveen, the UP STF force is getting a lot of input about her hideouts, and a lot of effort now is being done to get hold of Shaista Parveen. There are speculations that sooner than later, Shaista Parveen might either surrender or she will be arrested. Back to you. Piyush, stay with us. A quick follow-up question. Earlier we learned our sources telling Republic that Shaista could be hiding in Koshambi. Anything you're learning as to where could Shaista's hideout be? Is she in UP or has she escaped to another state? So you rightly mentioned, Samiksha, that yes, the last location which the sources in UP police told us was in Koshambi. Now, Koshambi is also a very significant place because this is a stronghold of Atiq Ahmed, and many people felt that because this is a stronghold of Atiq Ahmed, Shaista Parveen was hiding over here along with some sharpshooters of Atiq Ahmed who were escorting her and who were assisting her to escape to Bengal. However, following that information that has been given to us, the searches for Shaista Parveen is still being undertaken by UP police in several other areas of Uttar Pradesh. Most importantly, it is also to note that it is not only Shaista Parveen, but the UP police is also in the process of getting hold of Guddu Muslim, another person who is significant in holding the operations of Atiq Ahmed, and also a person who hurled bomb at Umesh Pal, leading to death of not only Umesh Pal but also the other constables. So yes, as of now, the search of Alright, getting in latest video, this one from inside the Saket court in the national capital. This after a woman was shot at inside the Saket court in South Delhi this morning. Now remember, the police, the woman we understand in this case was with her advocate when a person shot at her. The police meanwhile immediately took her to the hospital and further details are awaited. But that's another video that has surfaced from the Saket court. Let's straight away go across to Madhurima, who's joining us live from the location. Madhurima, have we been able to get more details on why exactly was this woman shot at? And all of this happened inside the Saket court from what we understand. Yes, Samiksha, this incident occurred around 10:30 a.m. in the morning, and injured Miss Radha, she ages around somewhere around 40s, though she is now in stable condition. She had suffered 2 bullet injuries, one in the abdomen, one in the hand, as you can see that he can be seen according to the eyewitnesses that have told the police officials that there were 4 to 5 rounds of fire. And one in the abdomen and one in the arm. The bullet went to hit Miss Radha. This Rameshwar Kumar Singh, the accused, has been was debarred by the Bar Council because an alleged case of under the section of 420 of the IPC was registered against him last year. And where this hearing was scheduled today at the Saket court, and Miss Radha was one of the witnesses, and then we know the kind of incident that unraveled. We can see in this video how clearly Miss Radha in a red kurti could be seen running away from this person who opened fire at her. And Ranjit Singh, I beg your pardon, not Ramesh Kumar Singh, his name is, according to the eyewitness, Ranjit Singh Dalal told the police official that around 4 to 5 rounds were fired. No law and order situation as such in the Saket court, because along with the Delhi police officials, the CRPF men have also been deployed at the Saket court. But the bigger question here arises, Samiksha, that how could this man get past the stringent security that has been put in place at Saket court with a weapon inside? What we are being told that after firing 4 to 5 rounds of fire, because he knew the court premises, the entire vicinity, he slipped from the court premises using the canteen, from the canteen back entry, Samiksha.
This is the primary information that we are getting, that 4 to 5 rounds were fired. One hit her, Miss Radha, in the abdomen, one in the arm, though she was rushed to the nearby Saket hospital where she is being treated. Her situation is, her medical condition is under control. She is stable, but the Delhi police officials are yet to nab Rameshwar Kumar Singh, and because he slipped from the canteen and as he was aware of the vicinity, we have to wait and watch as to how long will the Delhi police official take to nab this person, because this person is somebody who was already booked under 420 section of the IPC. Okay. For the IPC. All right, Madhurima, we'll have to leave it at that. Yes, we'll keep coming back to you. Let's leave it there. But that's, of course, the latest coming in. Remember, the woman has now been rushed to the hospital to AIIMS. Her condition is still said to be serious. This, of course, after several rounds were fired at her. We do not yet know the exact motive, but for now, moving on to another news break. That's just coming. All right, tracking the latest from Sudan, where situation still remains volatile. The latest we understand is that Prime Minister Modi would be holding a key review meet on the situation in Sudan. Remember, some Indians are still said to be stuck in Sudan, where situation still remains intense. Let's go across to our senior executive editor Abhishek Kapoor joining us. Abhishek, if you can give us more details on this review meet that would be chaired by Prime Minister. So this is the basic information that we have. Samiksha, the Prime Minister would be chairing a meeting reviewing the situation insofar as Indians stuck in Sudan is concerned. Remember, for the last 1 week, we have seen civil strife panning out, essentially because of a turf war happening between two generals, one heading the Sudanese army and the other heading a paramilitary force. Almost 400 plus citizens of Sudan and others have perished, including unfortunate death of one Indian citizen. Yesterday we saw in the NEA press conference weekly briefing, we were informed that the body of the Indian citizen has been secured, but there are about 2,000 plus Indian citizens still stuck in various parts of Sudan. And because there is no international airport functioning and bombings happening on the streets, no safe corridors available, it's difficult really to evacuate. We saw how External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar raised the issue with the UN Secretary General Antonio Guterres just last evening. Yes. And Indian agencies have been in touch with some other nations as well. Prime Minister in that backdrop now taking the review essentially with officers of the Prime Minister's office and of course Ministry of External Affairs and to chalk out a strategy so that, because in the last 24 hours there has been a fresh announcement of ceasefire. If corridors are available, then Indian citizens stuck there can be evacuated. All right, Abhishek, we'll keep coming back to you for the latest on that, but that's the latest coming in. The Prime Minister who would be holding a review meet on the situation in Sudan. Remember, more than 200 people have lost their lives in the clashes that have broken out between the army and the paramilitary forces. Meanwhile, the Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar, also spoke with the UN chief on the situation in Sudan. At present, he called for diplomacy to tackle the situation in Sudan. Listen in to Jaishankar's statement on what exactly is being done on India's part to help those stuck in the war-torn country. Well, we had a very good meeting. I'm on my way to South America, but once the fighting in Sudan started up, I felt it was very important that I meet the SG, and it was good enough to find time. So most of our meeting was on the Sudan situation. We also, of course, discussed the G20. We also spent some time on the Ukraine conflict. But essentially it was about Sudan. And in Sudan, the UN is at the heart of the efforts to establish a ceasefire. And that is really key. Because at the moment, unless there is a ceasefire and unless there are corridors, it's not safe for people really to come out.
All right, so Jaishankar, the External Affairs Minister, they're saying that all possible efforts are being made on India's part to evacuate the Indians stuck in Sudan. And there you see the still of Dr. S. Jaishankar holding a meet with the UN chief to discuss the situation in Sudan. All right, to the news break that's just coming in from poll-bound Karnataka, where it is a big relief for the Karnataka Congress chief D.K. Shivakumar, as the Election Commission has now upheld D.K. Shivakumar's nomination, thereby accepting the nomination of D.K. Shivakumar from the Kanakpura constituency. So a big relief there that's come in for D.K. Shivakumar, as the Election Commission has now upheld the nomination of D.K. Shivakumar. In fact, listen in to the reaction that came in while he spoke exclusively to the public on his nomination from the Kanakpura constituency. Sir, you have filed a nomination. You have filed a nomination from Kanakpura, and even D.K. Shivakumar ji has also given a filed his nomination. But why? What is the reason of you also giving a nomination? What's the reason? Because BJP people are doing background politics, dirty politics in the public life. They don't want to keep any opposition party to be live. They wanted opposition party to be curtailed. So on various issues, even for Rahul Gandhi, in 24 hours, not 24 hours, in 12 hours they have dismissed his membership. So on that basis, we are till yesterday 3 o'clock is our time. After 3 o'clock, we don't have time. So precautionary, we have filed a nomination. Do you think that there could be a reason of D.K. Shivakumar ji's nomination being rejected because of the High Court's order, which has rejected the CBI plea? No, there is a conspiracy is going on against D.K. Shivakumar from past 3-4 years. So we have to be cautious. We are also running a party here, we are heading a party, then we are going for an election. Elections are serious. They are afraid of Karnataka, they are worried about D.K. Shivakumar leadership. So that's why they are doing all these things. Are you prepared for contesting as Yeah, we are prepared. All right, so that was D.K. Suresh, the brother of D.K. Shivakumar, who's also been fielded from the same constituency, Kanakpura of Karnataka. Let's take a word from Prajwal as well. Prajwal, of course, that's a big relief that's coming for the Karnataka Congress chief, but explain to us on what grounds has the EC upheld the nomination of D.K. Shivakumar from the Kanakpura constituency? You know, Samiksha, enough information coming out of the fact that there was absolutely no sort of discrepancies in the nomination, in the affidavit which was filed by D.K. Shivakumar, because he had gone ahead and filed a 108-page affidavit which he had submitted to the returning officer, and finally they have scrutinized all the details and they have found that there was no sort of discrepancies. Discrepancies was mainly being looked into the sort of assets which D.K. Shivakumar had gained over the last 5 years as well, because we see an increase of over 63% in D.K. Shivakumar's assets, and he had spoken about both the fixed assets as well as the movable assets as well, and this is something which is very important. And even as we are speaking here, Samiksha, just quickly shifting focus now, we are getting to understand that Union Minister Shobha Karandlaje has arrived at the Election Commission office here seeking a ban on Imran Pratap Gadi here. So she has already gone to the Election Commission and now she is sought a ban on Imran Pratap Gadi too. So this is the Union Minister right there on our screens as well, and she had raised this issue of the fact that there was a connection of Imran with the Mafia brothers Atiq and Ashraf. Let's go across and get in the first reaction. राष्ट्रीय कांग्रेस